Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein I would be teaching you how to change the size of the cursor. Cursor का size change करना काफी ज़्यादा important होता है, so stay connected with me up till the very end of the video because this video is going to be very helpful for you. So let's get started with our video. So आज के प्लान में हम ये करेंगे कि वी आर गोना चेंज द साइज ऑफ दिस कर्सर। आप यहाँ देख रहे हो मेरा कर्सर जो मैं मूव कर रही हूँ, दिस इज प्रीटी स्मॉल साइज, स्पेशली लाइक व्हेन यू आर वर्किंग ओवर ऑल ऑफ दीज प्लान्स, फ्लो प्लान्स जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका कर्सर साइज थोड़ा सा बिग साइज हो। ठीक है, इतना स्मॉल साइज वुडंट रियली वर्क आउट, इट्स गोना create a lot of difficulties for you in future. So इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम साइज़ कैसे चेंज करते हैं। So आप यहाँ पर देख रहे हो दिस साइज़, यहाँ पर जिस तरह से है ना, ये साइज़, ये एक्चुअल साइज़ होगा, द मिनिमल साइज़ दैट यू कैन हैव। मैं अभी एक फ्लो प्लान बनाती हूँ, एक नॉर्मल जस्ट आउटलाइन ऑफ हाउ द फ्लो प्लान इज़ गोना लुक लाइक, एंड उसमें मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कितना ज़रूरी होता है to have the change of the cursor. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्विकली एक फ्लो प्लान बना दिया है, एंड नाउ टू चेंज द साइज ऑफ द कर्सर आई एम गोना यूज द कीवर्ड OP followed by the space bar. ठीक है, OP is basically the options toolbar that opens up near you, and under this display section, okay, under this display section आप यहाँ पर देख सकते हो crosshair size। यहाँ पर ये जो मेरा मिनिमल जो साइज था मेरा 5 था मेरा, okay, and I'm gonna increase the size to be 80। ठीक है, ये होगा मेरा 80 साइज, अब 100 भी यूज कर सकते हो। For now I'll be using this size 80, okay, and I'm gonna click OK. So as you can see the size of this cursor has drastically changed, isn't it? तो इसमें क्या helpful होगा मैं आपको बताती हूँ। For example, like if you want to move this particular ओके, एंड ये कहाँ पे यूज होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप एज यू कैन सी दिस इज गिविंग मी एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइंस कितना परफेक्टली क्रिएटेड है। अदरवाइज यहाँ पर आप इफ यू जस्ट स्विच ऑफ दिस ऑर्थो मोड, ओके, यहाँ पर यू कैन रियली एंड अप हैविंग सम स्ट्रेट लाइंस, इजंट इट? तो यहाँ पर इट कैन एक्चुअली गिव यू अ प्रॉपर एक्यूरेसी कि आपको किस तरह स्ट्रेट लाइंस चाहिए। इट इज गोना गिव यू माई proper angles like 90-degree angle, and movement of this would also get very easy. ठीक है, तो this is something very important, and having a big size cursor is something very important. So I hope you have loved watching this video. अगर आपने मेरे सारे AutoCAD, Revit, SketchUp जो मैंने videos create किए अपने channel पे, if you haven't taken a look over it, I'll put the links in the description box, and also you can also go and refer to all the videos there on my channel. I hope those will be very helpful for you. So stay connected with me, do like my videos, share it with your friends, just subscribe my channel, and inshallah I'll be back with another video. Up till then, take care and bye bye.